Unit 10. A World Without Books. किताबों के बगैर दुनिया. After completing this unit, students will deduce the meanings of unfamiliar words and phrases from the context. Identify and demonstrate the use of relative pronouns. Support the topic of oral communication skills with effective relevant information. Structure ideas and arguments in a coherent logical fashion. Learning outcomes. Pre-reading. Which books have you read in your childhood? Which is your favorite book? Why? How is book reading a good habit? Theme. It is a well-known fact that when there were no television or computers, reading was a primary leisure activity. People would spend hours reading books and travel to lands far away in their minds. The reading habit can become a healthy addiction and make us sensitive to global issues. It can also broaden our minds and improve knowledge. An Irish novelist, Colm Toibin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. The man's face was stern with concentration, and his finger tracing the line being read. At times the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. Finally, the reader looked up at the sky, while his face was beaming. It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. The point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. एक आयरिश नावल निगार कोलम टोबन ने एक बार एक कैंटोनीज आदमी को काउलोन फुटपाथ पर बैठकर किताब पढ़ने के बारे में एक कहानी सुनाई. इस शख्स का चेहरा इर्तिकाज के साथ सख्त था, और उसकी उंगली पड़ी जाने वाली लकीर को तराश रही थी. बाज़ औक़ात आदमी का इजहार उसकी तरक्की पर मायूसी में परेशान हो जाता. आखिर में, कारी ने आसमान की तरफ देखा, जबकि इसका चेहरा चमक रहा था. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया ये पढ़ने के अमल से अचानक खुशी की वजह से था, आज जो कुछ लिखा गया था इससे इंकिशाफ हुआ था, कहानी कैसे हल हुई इस पर खुशी थी. नुक्ता यह है कि इसके पास मज़ेदार निजी चीज़ थी, इसके और मुसन्निफ़ के दरमियान, हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान. There is a frequently asked question. What would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. It is always said that the latest technology signals the demise of the book. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. The fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. एक अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है, किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी? ये सवाल ही मुज़हका ख़ेज़ और मायूस कुन है. ये हमेशा कहा जाता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के इंतकाल का इशारा देती है. कई दहाइयों पहले ये सोचा जाता था कि रेडियो किताबों की जगह लेगा. ये खौफ टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ बरकरार है. लेकिन कैंटोनीज़ आदमी के किताब पढ़ने जैसे मनाज़िर इस तसव्वुर की नफ़ी करते हैं कि जदीद तरक्की पढ़ने के लिए ख़तरा है. किताबें बज़ात खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल हैं, जो सफ़हात पर फैली हुई हैं और हमें ज़िंदगी की पेचीदगियों का पता देती हैं. Literature is the story of humans. It is the record of who we are, where we come from and where we are going. Books make us travel at large. During our journey, we are connected with humanity. We identify ourselves with the character we meet and learn whether we love, loathe, fear or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. They tell us who could we become if we are not careful. Reading provides the deepest connection to the morals that make us humans, and part of a larger society. अदब इंसानों की कहानी है. ये रिकॉर्ड होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं. किताबें हमें बड़े पैमाने पर सफ़र करने पर मजबूर करती हैं. अपने सफ़र के दौरान हम इंसानियत से जुड़े हुए हैं.
हम अपने आप को इस किरदार से पहचानते हैं जिससे हम मिलते हैं और सीखते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, खौफ करते हैं या चापलूसी करते हैं। वो हमारी गलतियों और ख्वाहिशात को समझने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगर हम मोहतात ना रहें तो हम कौन बन सकते हैं। पढ़ना इन अखलाकियात से गहरा ताल्लुक़ फ़राहम करता है जो हमें इंसान बनाते हैं और एक बड़े मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। Books are a source of comfort for us. They are a safe shelter. Throughout human history, man has found peace in the written works. Books are bridges; through their pages we make our contact with society. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. किताबें हमारे लिए सुकून का ज़रिया हैं। वो एक महफूज पनागा है। इंसानी तारीख में इंसान ने तहरीरी कामों में सुकून पाया है। किताबें पिल हैं जिनके सफ़हात के ज़रिए हम मुआशरे से अपना राब्ता कायम करते हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए उन लोगों के मुकाबले बेहतर होते हैं जो नहीं पढ़ते। Though reading a book connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. As nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. Blogs, text messages, and e-books bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. But however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. The comforts of books defy time and break borders. अगरचे एक किताब पढ़ना हमें इंसानियत से जोड़ता है, लेकिन यह दुनिया का आखिरी हकीकी निजी फेल भी है जो बहुत ज़्यादा अवामी हो चुका है। दिमाग की परवरिश के तौर पर यह फ़ास्ट फूड के हवाले से दुनिया में सुस्त खुराक है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और ई किताबें अखबारात और रसाइल की तरह मुताबकत और फौरी तस्कीन लाती हैं। लेकिन इस तरह की शक्लें कितनी ही अहम हैं, वो सिर्फ इस वक्त तक बरकरार रहती हैं जब तक कि वो जिस चीज़ पर छापे जाते हैं। किताबों की आसाइशें वक्त की खिलाफ वर्जी करती हैं और सरहदें तोड़ देती हैं। Books offer other types of pleasures as well. The joy of their touch, sound, and fragrance is immeasurable. The pleasure of their understanding is an addition to it. The sharing of a book with friends is still another form of joy. Libraries are the evidence of grandeur of a civilization. किताबें दूसरी किस्म की लज़्ज़तें भी पेश करती हैं। इनके लम्स, आवाज़ और खुशबू की खुशी बेहद है। इनकी समझ की खुशी इसमें एक इजाफा है। दोस्तों के साथ किताब का इश्तिराक अब भी खुशी की एक और शक्ल है। लाइब्रेरियां तहज़ीब की अज़मत का मुनबोलता सबूत हैं। It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance, and roads forward. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history, or voice. ये ज़रूरी है कि हम हर फ़र्द को किताबों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका फ़राहम करने के लिए काम करें क्योंकि पनागाहें, रिज़्क़ और आगे की सड़कें। किताबों के बग़ैर दुनिया का तसव्वुर करना सोच, एहसास, दर्दमंदी, तारीख़ या आवाज़ के बग़ैर दुनिया का तसव्वुर करना है। Happy learning!